स्टार्टअप इज अ 0-1 गेम, आना है तो पूरा हो, नहीं तो मत। So having more co-founders are good or bad? Majority of times it is very challenging to get everyone into the same place. Time becomes an issue, not their intent. So we became three. Hmm. We started with this. IMT में चालू करा ताकि Hmm. proof of concept मिल जाए. Hmm. IMT के बाद कुछ results मिले and then we went full time. मेरे कुछ दोस्त जो थे founders, I asked them to come also full time. We ran it for 3 years in Gurgaon, and this led me to my one of the another great learnings is that over reliant on external funds and not building a self-sustainable business model is a recipe for disaster. We realized in our first two startups we built pretty solid technology piece. Hmm. हमारे जो यूजर बेस था फर्स्ट में 30-40,000 था, सेकंड में करीबन 1 लाख। तो हमें टेक्नोलॉजी पीस बनाना आता है, स्केलेबल है, फ्यूचर ड्रिवन है, काफी एडवांस। हम जो फेल हुए वो एक सेल्स के अराउंड हुए, किसी और चीज के अराउंड हुए। सो वी थॉट व्हाई नॉट यूज आवर स्ट्रेंथ एंड डिलीवर इट फॉर दी स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस ग्लोबली। इट्स लाइक रिलेशनशिप। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपको 6 महीने पहले पता होता है कि इससे नहीं चलेगा, हमें ब्रेकअप Okay. करना है, वो मैटर ऑफ टाइम है कि आप बस बोलते हो। तो 6 मंथ्स का टाइम वो होता है। इट्स थॉट्स, टर्मोइल ऑफ थॉट्स, डू इट एंड नॉट टू डू इट। The only reason we were able to stand up again was कि यार एक सपना देखा है, उसको पूरा कर लेते हैं। So hello Manu, thank you so much for joining in. How are you doing? I'm doing very good, Jyoti. Thank you for inviting me. It has been a pleasure. Awesome. So, before we actually go towards what are you doing in present and how Scale Up Ally is actually helping in the market, I actually wanted to understand your past first before we talk about the present. So I found something very fascinating that your initial two startups you did while doing your education, like the first startup while pursuing graduation, the second startup while pursuing post graduation. Take us to that journey. मतलब कैसे आइडिया आया कि ये स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मैनेज किया एजुकेशन के साथ एंड ऑल दैट. No, no, thank you for that. It has been a very interesting journey. Um, you and I come from the same city, the city of education, Kota, और सबकी शुरुआत, सबकी bringing वहीं से है. So we have seen education very closely. We have seen the ups of it and the downs of it by being in Kota. And the same byproduct of it, Kota Bansal classes, and then this IITs, NITs, engineering, and MBAs, a typical cycle of that. So, and half of my family comes from an education background. They are teachers, professors, and things like that. So I've seen that, and deep down, I have always found highly inefficiencies in our current education system. So deep down, I have this problem at, at the back of my head. So this whole journey of entrepreneurship started in 2011 when I was in NIT Jaipur. So I started a platform called Pass Karado. It is an education Very platform. interesting name. How did you come up with this name? इसकी भी कहानी बढ़िया है। तुम एक एग्जाम हो रहा था, थर्ड हाँ. ईयर में थे हम, और मैं पहली बार उसके लिए पढ़ के गया। हाँ. बाकी सारे एग्जाम मैंने बिना पढ़े दिए थे या बहुत हाँ. कम पढ़ के दिए। हाँ. मैं बहुत पढ़ा उसके लिए, और हम्म. मैं एग्जाम देने गया, और मैं एग्जाम देते ही बाहर निकला तो मुझे मतलब एग्जाम का पेपर देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो फेल हो गया, जो पढ़ा था बिल्कुल नहीं आया। हम्म. पहली बार तो पढ़ा और कुछ हम्म. आया नहीं। हम्म. जैसे तैसे मैंने एग्जाम दिया, मे भी बेर मिनिमम क्वेश्चन आंसर कर दिया। मैं जैसे ही हॉल से बाहर निकला, मुझे कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो बात करते हुए थे कि यार सेम पेपर लास्ट ईयर की रेप्लिका है। मेरा माथा वहीं खराब हुआ कि मैं पागलों जैसे पढ़ा है, मेहनत करी, मैंने कहा इज्जत से एग्जाम पास करेंगे, और ये हुआ। हम्म. मतलब सिस्टम चाहता ही नहीं कि हम पढ़ाई करें। एंड दिस इज वेयर आई वेंट टू माई रूम। मैंने अगले एग्जाम की तैयारी भी नहीं करी। मैंने लैपटॉप खोला। आई एम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं आती है। हम्म. कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैंने 4 घंटे के अंदर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, विद द होल इंटेंट कि पुराने पेपर्स सबके पास होने चाहिए। कोई पास या फेल इसलिए ना हो क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा पेपर था लास्ट ईयर।
So information asymmetry should not be there in this market. The pass and the fail should be decided by the person's effort, right? True. एट तो शाम को 7-8 बजे तक आई लॉन्च द वेबसाइट, पर नाम नहीं दिया था. Hmm. पर देन आई रियलाइज कि अगर मेरे पास पेपर होता तो मुझे पास होने में आसानी हो जाती. Hmm. एंड फ्रॉम देयर दिस नेम केम, पास करा. Oh, very relatable. सब एंड लोग यही होता बोलते हैं भी while taking education, अरे पास ये करा दो भाई, पास करा दो. बस ये वर्ड जो होता है ना, एग्जाम से एक दिन पहले जब जाते हो किसी के पास जो आपसे ज्यादा जानता है, आप उसके बाद जाके क्या बोलते हो, भाई कुछ बता दे यार, पास करा दे यार एक बार, Hmm. बस Hmm. पास करा दे. तो वो सेम आई वांटेड टू हैव समथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज. Hmm. So this is where we started it. We ran it for 2-3 years. Hmm. Uh, but I think in the initial 1 or 2 years, we have 30,000 registered users. And we covered close to the entire Rajasthan universities, NIT Jaipur, and couple of other private universities. When I say cover, it means we have done the past papers, academic material, Hmm. and classroom presentations and things like that. So So revenue model? everything, yes. So मैं बात कर रहा हूँ 2011-12, Hmm. तो जहाँ पे सबके पास सिम्बियन फोन होता था, Hmm. E63 टाइप्स Hmm. फोन नोकिया के, Hmm. राइट. उस वक्त 5G नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड चलते नहीं थे. Hmm. सो पैसे लेना स्टूडेंट से वाज नॉट एज इजी, Hmm. राइट. देयर वाज नो सिस्टम टू बिहाइंड दैट. सो वी थॉट ऑफ यूजिंग एडवर्टाइजमेंट्स एज वन ऑफ Hmm. द रेवेन्यू मॉडल्स, Hmm. है ना. एंड एडवर्टाइजमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड गुरुज, इट्स वेरी हार्ड टू रन. Hmm. We realize that while doing it, पैसा देने को कोई तैयार नहीं है, Hmm. right, advertisements के लिए. But at the same time, we were in the final year and we had to go to our jobs. Like we accepted our full-time job. And that became one of the bottlenecks where our commitment to startup or to pass Hmm. Karado was very limited. We all as a founders was not able to give enough time to grow this business. How many founders? 7. हाँ. मुझे ये भी कॉमन दिखा आपके दोनों उसमें कि इट वाज नॉट स्टार्टेड बाय अ सिंगल पर्सन. आप लोग को फाउंडर्स की जर्नी में रहे हैं अभी तक जितने भी आपने स्टार्टअप किए हैं. हाँ, अच्छा, एक के तो कैसे बच्चा भी रैप नहीं अप है किया स्टार्टअप. फिर? तो हम सब जॉब ही कर रहे थे. और हम्म. मुझे याद है अब वो एक टाइम पे मीटिंग करना, सबको अपने हम्म. अपने टास्क देके कर देना, सबकी हम्म. फुल टाइम डिपेंडेंसीज होती है. हम्म. नया नया पैसा हाथ में लगा था तो खर्च हम्म. भी करना होता है, हम्म. राइट. आपकी जॉब बैंगलोर गुड़गांव में है, यू सी अ वेरी डिफरेंट लाइफ द वे हम्म. यू हैव लिव्ड इन अ स्मॉल सिटी. हम्म. हम्म. सो वी वर नॉट एबल टू, इट्स इन टोटलिटी वी वर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू द organization, to the हम्म. startup. हम्म. And this is where almost in 2013 times हम्म. we decided to shut it down. हम्म. कि यार एटलीस्ट जॉब में ढंग से ध्यान देने. हम्म. सो रियलाइज कि स्टार्टअप इज अ 0-1 गेम. आना है तो पूरा हो, नहीं तो मत. वी कैन नॉट हम्म. डू पार्ट टाइम. हम्म. कुछ स्टार्टअप हो सकते हैं फॉर श्योर पार्ट टाइम में, पर हम्म. मेजोरिटी ऑफ देम विल नॉट बी. So what were those top 2, 3 learnings which you came out with? The first startup was that commitment. It has to be 0-1 thing. करना तो हम्म. करो, नहीं तो चिल मारो. हम्म. जीवन जियो, कोई इशू नहीं है, कोई खराबी हम्म. नहीं है ना. एंड सेकंड थिंग कि एनी मॉडल शुड बी, बिजनेस मॉडल शुड नॉट बी कि यार मैं सर्व आपको कर रहा हूं पर मुझे पैसा किसी और से लेना है. सो देयर आर 3 parties इन्वॉल्व. हम्म. द फंडामेंटल्स ऑफ एनी बिजनेस इन स्टार्टिंग इज 1-to-1 ट्रांजैक्शन. मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, रिटर्न में आप मुझे उसके मनी दे रहे हो. हम्म. सो मुझे था कि कुछ भी बिजनेस करूंगा तो इट हैज टू बी 2 party बिजनेस, इट कैन नॉट बी 3 party हम्म. as of now. हम्म. Like Okay. Amazon is a 3 party business, Facebook is a हम्म. 3 party business, हम्म. right? They can be run when you have deep pockets. हम्म. But the beginning has to be a one-on-one. जिनको सर्व करे उधर हाँ, से पेमेंट. वहीं से फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा business? तो जब 2012 में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मीनवाइल आपने इसको रन किया थोड़ा टाइम उसके बाद भी किया, यू वर वर्किंग फॉर अ जॉब एंड देन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू गो फॉर अ पीजी एंड दैट्स व्हेन यू एनरोल योरसेल्फ इनटू आईएमटी गाजियाबाद. And Yes. while doing that, you started Admito. That was also in education.
So how was हाँ this different from the previous one, and what all ओके you know learned and tried to put it here? Like just wanted to understand कि next ladder कैसी थी? ठीक है क्योंकि क्योंकि बिकॉज मैं कोटा से हूँ अपन लोग हम्म कोटा से हैं हम्म आई कैन इजिली रिलेट टू द प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सेक्टर हम्म सम ऑफ द आईज वर ट्यून टूवर्ड्स दैट हम्म एंड मैं जो बाय प्रोडक्ट हूँ एक बहुत आई हैव नॉट बीन अ टॉप गाय आई हैव नॉट बीन अ समवन जो रोते होते पास होता है आई हैव बीन अ वेयर एवरेज गाय हम्म राइट एक आम आदमी की शक्ल वाला पर्सन रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक है सो मुझे वो प्रॉब्लम दिखी है खुद ने फेस करी है so when I moved into IMT Ghaziabad the second problem I faced was this MBA college selection हम्म what I mean by that when you're not when you do not have enough percentile for IIMs हम्म right हम्म college selection becomes very hard you हम्म have a lot of parameters colleges are across India हम्म so in 2014 there were approximately 750 B schools. हम्म I was around 85 to 95 percentile के bracket. हम्म So I still have 5, 7 good colleges which is known to the market. हम्म But what about the students who are below 85, 70, 75, 80? They have हम्म plethora of options. And what you used to do, शर्मा जी के बेटे ने तो ये चूज करा था या हम्म ये मैगजीन की टॉप रैंकिंग में ये कॉलेज होता तो यहाँ चल जा दिस वाज अ डिस्कशन यू यूज्ड टू हैव एंड पीजी इज मोस्ट प्रोबेबली योर लास्ट डिग्री इट हैज टू बी थॉट वेरी केयरफुली सो दिस इज वेयर वी इंट्रोड्यूस द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट कि हमने क्या करा सारे बी स्कूल्स के पैरामीटर्स placement parameters education pedagogy the cities they are in what they are known for everything we kind of had that data हम्म and we used to get the students ask for their preferences education qualification your future ambitions and we used to match it with the college life and offerings इसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बने और हम बोलते थे कि यार आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा हो सकता है और परफेक्ट फिट कौन सा और ये दोनों ना मिले तो सेफ क्या है इसके नीचे मत जाओ and these 10, 7, 10 colleges could be something that suits you and will cater to your future ambitions so we started with this and IMT Ghaziabad के बाद I never took a job from IMT हम्म Ghaziabad first learning हम्म करना है तो ढंग से करो नहीं तो मत हम्म right so we started with that uh, How the many 7 co-founders? founders 3 this time Okay. So having more co-founders are good or bad? majority of times it is very challenging to get everyone to the same place then time becomes an issue not their intent हम्म time becomes an issue because everyone has their own personal journey also हम्म so we became three हम्म we started with this IMT में चालू करा ताकि हम्म proof of concept मिल जाए हम्म IMT के बाद कुछ results मिले and then we went full time मेरे कुछ दोस्त जो थे founders I asked them to come also full time हम्म we ran it for 3 years in Gurgaon हम्म 2016 से लेकर 18 15 से 18 तक हाँ हाँ 15 से 18 तक 15 was in हम्म a college so 15 हम्म 16 is in a college and 16 to 18 full time हम्म um, and because it's a edtech हम्म so you do not have a revenue model from the day one there is हम्म no paying customer हम्म um, and again because of edtech I was again stuck into this three party model where हम्म student might not pay me for हम्म these suggestions I have to get the money from the colleges or from consultants हम्म so three party factor was one constraint and secondly it's a product based startup you do not have money so you need to rely on investors हम्म and our sole investor backed out in 2018 Okay. so we were left with no funding and a failed venture हम्म and this led me to my one of the another great learnings is that over reliant on external funds and not building a self sustainable business model is a recipe for disaster हम्म और ये सब बोलते थे ये अभी भी बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ये होना सब चाहिए बोलते हैं है इधर ना कि लॉस पर ये नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए पर वो जब तक फील नहीं होगा ना वो हिट नहीं होगा हाँ शार्क टैंक यू के विल बाद नॉट कितना ज्यादा अंडरस्टैंड ये बोलने लग गए कि प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे यू कांट रिलाई आउटसाइड व्हेन यू आर अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड सो ऑन पर जिसका समय सही चल रहा है एंड और मे बी आई गेस कि वो जो वैल्यू दे रहे हैं पीपल आर बिलीविंग देयर
तो वो होता है। तो कैसा लगा, मतलब यू वर अ को फाउंडर फॉर सो लॉन्ग, एंड देन यू हैड टू जॉइन अ जॉब, तो कुछ चैलेंजेस आए मतलब इंटरनल फाइट से, या आपको यू वर हैप्पी लाइक कि नहीं, मतलब तो मैंने ट्रांजिशन कैसा था? हम्म। जॉब ग्रेजुएशन के बाद करी थी, आफ्टर गोइंग फुल टाइम. सो हम्म। like from IMT Ghaziabad, हम्म। I never did a job. हम्म। So 2018 में मैं the second startup admit of field, हम्म। and it was like 2012 के ग्रेजुएट है, 18 हो चुकी है, 6 साल हम्म। डाउन द लाइन, हम्म। right? You do not have any particular skill which is applicable by the market, like where people will hire you for it. हम्म। You're down by 20-25 lakh of your personal savings, जो हम्म। आपने साइड के छोटे मोटे कुछ काम कर कर जॉब्स कर कर कमाए थे, हम्म। राइट? अब क्या करोगे आप, right? And 18 is like 2018 was like we were 28 age group. हम्म। शादी की हम्म। उम्र भी हो रही हम्म। है ना? और खुद को नहीं लग रहा, पर एटलीस्ट पेरेंट्स का प्रेशर तो है ही, हम्म। नहीं? ट्रू। सो कुछ टाइम था, वो 5-10 दिन, इट वाज वेरी हम्म। हेवी, व्हाट टू हम्म। डू, व्हाट नॉट टू डू, हम्म। शुड वी कंटिन्यू इट और व्हाट, है ना? बहुत थॉट्स आए. देन somehow one thing got stuck. We realized in our first two startups we built pretty solid technology piece. हम्म। हमारे जो यूजर बेस था फर्स्ट में 30-40 थाउजेंड था, सेकंड में करीबन 1 लाख. तो हमें हम्म। टेक्नोलॉजी पीस बनाना आता है, स्केलेबल है, फ्यूचर ड्रिवन है, काफी एडवांस था. हम जो फेल हुए वो एक सेल्स के अराउंड हुए, किसी और चीज के अराउंड हुए. सो वी थॉट व्हाई नॉट यूज आवर स्ट्रेंथ एंड डिलीवर इट फॉर दी स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस ग्लोबली. व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर ग्लोबल वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत स्टार्टअप्स इमर्ज होते हैं, and a lot of them fails because they do not have good technology or a good technology partner with them. हम्म। Either they end up investing too much in technology or too less in technology. हम्म। And this is where we found a gap. We want to become a company that people can rely as a main technical partner or their dedicated development center. And we want to become that reliable company for those startups and small business enterprises. Hence, with this, we started in 2018, close to end of it, कि यार ये चालू करते हैं, ओके, start into IT services by विद सेम building को software फाउंडर्स। pieces. Same co-founders. ओके, सो कैसा था वो ट्रांजिशन टाइम जहाँ पे यू थॉट कि बहुत फाइट मारने के बाद भी फाइनली एक्सेप्ट कि चलो इसको बंद करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद भी ट्राई टू बिल्ड समथिंग, तो वो कितने टाइम का गैप लगा आपको टू कन्विंस योर सेल्फ, कन्विंस पीपल अराउंड, एंड वो डार्क फेज से कैसे आपको लगा कि आई कैन स्टिल ट्रस्ट माई इंटेंट, ट्रस्ट माई माई केपेबिलिटीज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं बिकॉज वी पुट आवर व्हाट्सएप लिंक, बहुत बार उनको लगता है नहीं नहीं ये तो मैंने ट्राई हो गया, बस अब मेरे बस का नहीं है, लाइक दे फील लाइक बस अब हार गए टाइप्स। हारने वाली फीलिंग यस बहुत बार आती है. आई थिंक द ओनली रीजन वी वर एबल टू स्टैंड अप अगेन वाज कि यार एक सपना देखा है, उसको पूरा कर लेते हैं. बट ओनली थॉट कि यार एक सपना देख ही लिया है तो पूरा करने में क्या है. And luckily, we come from the families where we do not have to send money back to home. They are all self-sufficient, right? हमें सिर्फ खुद का ही करियर बनाना है. So these parameters then held me up. Now the transition phase that you mentioned, very truly, deep down you get to know कि ये बंद होने वाला है. आपको 6 महीने पहले पता पड़ता था. It's like relationship. अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपको 6 महीने पहले पता होता है कि ये इससे नहीं चलेगा, हमें ब्रेकअप करना है. वो मैटर ऑफ टाइम है कि आप बस बोलते हो. तो 6 मंथ्स का टाइम वो होता है. It's a thoughts, a turmoil of thoughts, do it and not to do it, right? And once you stop it, right, the next day you feel very relaxed. बहुत रिलैक्स हो जाते हो आप, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था उसको चलाने का. अब आपके दिमाग में आ गया बंद ही करना है, चलो बंद कर. तो फिर आप यू रिलैक्स, यू गो आउट फॉर अ कॉफी, आप शाम का सनसेट देखते हो, रात को ऑल नाइटर मार कर बाहर घूमने जाते, यू डू दैट. यू हैव अ सैडनेस आल्सो डीप विद इन कि यार ये बंद नहीं होना चाहिए था. यू माइट ऑल्सो हैव थॉट्स कि यार 2 दिन और चलाता, 2 महीने और चलाता, 2 साल और चलाता तो शायद कुछ और हो जाता. यू हैव दैट ऑल थिंग, बट स्टिल यू फील वेरी रिलैक्स ऑल्सो कि वो प्रेशर से हट गए.
But then again, your brain looks out for another one. Hmm. एक रिलेशनशिप से बाहर आके यू लुक आउट फॉर अनदर वन. हाँ. ठीक है, वो रिबाउंड बोल लो, कुछ भी बोलो, वही सेम फिलोसफी यहाँ से. बट वी टुक सा डिसेंट टाइम, Hmm. क्योंकि यार मैंने कहा करियर स्टेज पर है, ऑलमोस्ट 28-30 साल के हो जाएंगे, कुछ कमा Hmm. नहीं रहे हैं, Hmm. है ना. थिंग्स विल बिकम मच मोर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट कैन वी डू. So after careful consideration of a month or 2 months, we decided to give it one last try of now doing in IT services, not doing any product, but doing services business. Directly to businesses. So it is a B2B model, no? It's The a current B2B one. मॉडल. यस, आपको कुछ जरूरत है, आपने मुझसे कुछ बनवाया, आपने मुझसे अगेंस्ट में मुझे पैसे दिए. तो जैसे आपका विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द करंट मॉडल. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, एक एआई की वेव आई थी बहुत ही ज्यादा. अभी मैं बोलूंगी वो थोड़ा थोड़ा सेटल हो रही है. जैसे मैं भी आई एम परसुइंग पीएचडी, तो वहां पर भी वो कह रहे थे अच्छा टॉपिक में कुछ भी एआई से रिलेटेड जोड़ दो तो एक्सेप्ट हो जाएगा. या मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी डू कॉन्वर्सेशन, तो वो भी बोलते हैं कि बस सब एआई एआई को मिल रहा है सारा फंडिंग. तो मुझे हाथ से समझ रहा था. एंड यू वर वेल प्लेस्ड इन ईयर 2019 के अराउंड, 18 एंड के में. एंड यू आर वेल प्लेस्ड है. तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू हैव अ स्टार्टअप इन एआई? Okay. Uh, the though people have started talking about AI in 2018-19, but the true wave came after ChatGPT, यस. right? Um, I distinctively recall when I was visiting Dubai. I visited a GITEX, uh, as one of the biggest, say, एक summit in, uh, होता है, एक्सपो होती है. एंड एंड आई वाज लाइक कि यार, मैंने एक आध छोटा मोटा एआई के बारे में पढ़ लिया है, लोगों से मिलूंगा, एआई बढ़िया से बता दूंगा. एंड आई वेंट देयर, इट वाज लाइक एवरीवन who were exhibiting it or who have a booth were talking about AI only. And they are much more advanced, or they are much ahead in the journey of AI than us. And majority of them are service providers out there. So मुझे लगा कि मैं जो सोच के बैठा था, मैं कुछ दो यूज केस मुझे समझ में आ चुके हैं, एंड आई वाज वे बिहाइंड देन दैट. और पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट उधर ही है. एंड दैट हिट अस कि यार, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम बहुत पीछे रह जाएंगे. एंड नाउ इफ वी फेल दिस टाइम, वी विल फेल बिकॉज वी बिकम ऑब्सोलीट. हम अपने इकोसिस्टम में बैठे हुए थे सोचकर कि नहीं, आईटी सर्विस इज अ हेड काउंट बिजनेस. द मोर पीपल यू हैव, द मोर बिलेबल यू कैन मेक, राइट. एंड स्टिल द डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर, राइटिंग कोड्स, मोबाइल एप्स विल बी देयर. पर वहां जाके आंखें खुली, मैंने कहा नहीं, इट हैज टू चेंज. एंड देयर we decided to become an AI first company. What I mean by that is, every work that we do internally to deliver a task for a client, to deliver a project for a client, it has to have certain elements of AI at certain intervals. Okay. So can you give us some example to understand this better? हाँ. So एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, create a proper scope document. Then there are certain steps you create the work breakdown structure. It's more of a technical thing. Basis the scope you decide कि फ्रंट मतलब कितने लोग लगेंगे, कौन कौन पर्सन कितना काम करेगा, कितने दिन का काम है. उसके बेसिस पे यू यूज certain project management tools to start delivering the project. That creation from scope to a work breakdown structure, or from a work breakdown structure to certain user stories in a project management tool, उसमें हमें consistencies नहीं मिलती, राइट. किसी एक प्रोजेक्ट में एक पर्सन ने करा, किसी में दूसरे ने करा, द आउटपुट वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट. एंड वी रियलाइज द बेटर दैट stage or the input at that stage is, the better the project turned out to be. तो हमने क्या करा, we put a layer of certain AI agents. We trained an AI agent के scope के basis पर work breakdown structure automatically बनाना. And we trained it on our past data. और once that work का breakdown structure बन गया, then a senior human can come in and then verify it. यार ये सही बनाया नहीं था. So this is one case where we're using AI to deliver consistent experience across our projects. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सेल्स का. तो सेल्स पर्सन
love talking, but they suck at any kind of documentation. Hmm. CRM अपडेट करना है, स्कोप डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ So भी बनाना relatable. Yeah, yeah. है ना? इवन मीटिंग के बाद एमओएम बना के भेजना भी बहुत पेनफुल काम होता है. Hmm. वी थॉट कि यार इस काम को आसान करना पड़ेगा, लेट देम डू द जॉब दैट दे लव डूइंग इट. Hmm. सो नाउ वी रिकॉर्ड all our calls. Our 99% of the calls are virtual. We record all of them, and we take out the transcript from the audio, and from that transcript we create an MMs and send it to the client within 5 minutes after ending the call. अब ये ह्यूमन को नहीं Okay. करना, ह्यूमन के पास ऑटोमेटिकली बना बना ईमेल आ गया, उसने क्विकली वेरीफाई करा, माइनर चेंजेस करे एंड सेंड इट अक्रॉस. Hmm. तो आपकी इसमें आइडियल कस्टमर कौन होते हैं? मतलब आई अंडरस्टैंड दीज आर बिजनेसेस, बट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस वेयर यू कैन हेल्प द मोस्ट और क्रिएट एन इम्पैक्ट द मोस्ट? Okay, so these I will describe these as an SMEs, small and medium enterprises, from geographies like Australia, USA, and Middle East, majorly. Uh, these, because of the regions, the areas that I have mentioned, is because they're very advanced, or they're very open in adopting technology. At the same time, they come with an open mindset of giving that work to in India. Where you go in a European region, you might face certain resistance because of the language and geography. In market में openness, अब ये जो startups और ये small businesses हैं, they are in a stage where they want to increase operational efficiencies by adopting technology. So certain processes होंगे जहाँ पे humans उनके लिए भी consistent output deliver नहीं कर पा रहे, and they want to bind it using technology, so that it becomes more the system becomes more visible and system becomes more predictable. So to understand scale up ally, this is basically helping small businesses, SMEs, small and medium businesses to automate their processes, and you are doing it with the help of AI. Is this the simple version of understanding where scale up ally is placed? Uh, yes, but I will still elaborate a bit. Mhm. So Scale Up Ally is an organization that helps SMEs Mhm. in improving their operational efficiencies Mhm. using technology, data, and AI. Mhm. Okay, technology, it means any piece of software piece, where mobile, desktop. Mhm. Data means the data that they have captured, gathered, what insights you can make, and adding a layer of AI that can bring insights, recommendations, and make the system smarter. Okay. So your ideal customers are not in India. And the reason majorly is because the kind of mindset SMEs has and the budget issues and all that. Yes. Now, I also wanted to understand, since you mentioned about, that you are operating majorly outside. So there must also be your personal journey about, fundraising, pitching, pitch deck, and so on. So would you like to share some with us? I think fundraising is a very essential part of any journey. Mhm. It helps you take risk. It Mm. helps you also be a part of that ecosystem where those people have lived this journey in and out Mm. for many years, Mm. right? But not all businesses needs to have funding. Mm. So we need to understand you need to have funding only when it is required. Mm. And how do you define when it is required? It means that you have given your commitment, you have been into the system, you know, you have done the commitment, you have started understanding the customers or clients, right? Finding a gap and finding the product market fit, both are different. It takes time to find a product market fit. क्या सर्विस बेचनी है, क्या प्रोडक्ट बेचना है, किस रेट पे बेचना है, क्या फीचर्स बेचने हैं, उसको पिच कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, राइट? उनके क्या हेजिटेशन है. It takes time to that. Once you have these two things, and then you need funding, take it there. Mm. But we as a scale-up ally comes from a services business, and we are profitable from day one. So at a scale-up ally, we are fully bootstrapped. We have never taken a single penny.
from any investors, friends, family, nothing. Oh, so is it because of your previous experience at Admito or you feel like जरूरत ही नहीं है? जरूरत नहीं है. हाँ. तो And आपको क्या लगता है कि आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच नीड मैसिव कैपिटल और उनको तो फंडिंग के लिए जरूरत ही होगी, जरूरत पड़ेगी सही, बट जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद रेजिंग फंड्स एंड ऑल, तो कोई कोई ऐसी चीज आप बताना चाहोगे, पहले मैं सोचता था अबाउट रेजिंग फंड दिस, बट आफ्टर माय एंटायर एक्सपीरियंस दिस इज व्हाट आई एक्चुअली फाउंड आउट कि रियलिटी इज दिस, बट माय परसेप्शन वाज दिस, एनीथिंग लाइक दैट विद योर एक्सपीरियंस एग्जांपल लाइक व्हाटएवर? it's like it have multiple perspective, but what I have seen, आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हम्म. आपको लोन तब मिलता है जब आपको जरूरत नहीं होती. हम्म. जब जरूरत होती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं. ये राइट. मैंने सुना है कि लोन उन्हीं के लिए है जिनको नहीं हाँ, चाहिए. जिनको नहीं चाहिए. सो बिल्ड योर बिजनेस लाइक दैट, आपको फंड नहीं चाहिए. एंड देन यू विल गेट द फंड्स ऑटोमेटिकली. देयर हैव बीन टाइम हमें एक्विजिशंस की भी रिक्वेस्ट आई थी. हम्म. Someone sitting in US, हम्म. service based business or product based business, they have requested us to an entire acquisition, equity plus cash. हमें फंड्स की भी रिक्वायरमेंट आई हुई है कि यार मैं फंड्स करने को तैयार हूँ, तुम्हारा सस्टेनेबल बिजनेस है. एंड आई एम लाइक, ठीक है, पर मैं करूंगा क्या? मतलब मैं खुद एक प्रॉफिट में बैठा हूँ, मैं उसको ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिजनेस. यस, देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल नीड फंड्स मोर देन आई हैव. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल रेज फंड्स फॉर श्योर. but let the time come. And अभी वर्ल्ड में टर्मोइल है एआई का. Everyone wants to do something in AI. They are waiting for a right use case. They are doing some POCs. But whenever they land on a right use case, they will need funds to institutionalize that idea. हम्म. So how is it like scaling from four to 100? You mentioned on your LinkedIn that it is 4 employees to 100 team now. So how is it like? क्योंकि मैंने तो देखा है बहुत सारी टीम्स ये 0 to 1 वाले गेम में ही इशू आ जाता है, 1 to 100 वाला बात होता है जो, आई मीन द बिजनेस स्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. So managing team, getting right people, then logistics and so on. So how was the experience into that scaling? Because I think इससे पहले वाले दो स्टार्टअप्स में वो लेवल पे नहीं आए होंगे हम जहाँ पे we had more than 50 people Ah, or 20 people. हाँ. yes, yes. No, they had only founders only उस time पे तो. अच्छा. Uh, but this journey has been a pure fun, a pure roller coaster ride. है हम्म. ना? सुख दुख सब आया है इसके अंदर. But uh, this journey has taught me that uh, all majority of all the businesses and especially the services business are people driven business. So मुझे client लेके आना है and client has certain expectations. इनको काम करने के लिए I have certain team members टेक्नोलॉजी में. तो काम तो ये दोनों करेंगे, मैं तो सिर्फ इनको जोड़ रहा हूँ in a very pragmatic way. So what I need to build is I need to build an ecosystem where these two parties can come together and work for the benefit of each other. अगर ये हो गया and I can provide that culture, I can provide that ecosystem, I can provide the right tools and resources, ये system अपने आप flourish करेगा. And hence from the day one I never outsource HR department. I have handled the HR department myself since beginning until date. Yes, there are operational level HR work, उसके लिए HRs हैं, वो काम करते हैं. But to define where the culture is going on, where it is lacking, क्या हो सकता है, I keep a personal track on it. And now this ecosystem has become self-sufficient for us. अब मुझे इस ecosystem, अगर मुझे 100 से 500 की जर्नी में भी जाना है ना, I do not have to do profound changes. So first thing first, and the ये हुआ क्यों? Because we all come from a similar kind of family where we all our families are close knit families. हम रहे न्यूक्लियर हैं, पर जब देखा है हमारे भाई बहन cousins everything, that still when we meet we are very close to each other. Yeah, even I was surprised when you said I visit my hometown Kota once in every 2 3 weeks, and you said that you bring kachori. हाँ, obviously कोटा से कोई आ रहा है और कचौरी नहीं ला रहा तो पाप है. तो तभी मुझे लगा कि मतलब that shows that how close knit family bond it is. तो मैंने कहा जब कुछ बना ही रहे तो why not extend the culture that we have seen in our childhood, extend it to our company also.
And I realized people love that. People are hungry for that. The companies here are only talking about profit, right? But they're not, a less number of companies are talking about people. Hmm. We need to uplift our team members. वो mindset से ही हम चल रहे हैं. And this has been, जो भी challenges आए, very frankly, of building the team, they all has been resolved uh, because of the culture. तो टेक्नोलॉजी एक कंपनी यूज करती है क्योंकि इवेंचुअली उसको लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव होगा उसके काम को लेके, एंड वो उसको ये भी लगता है कि मोर ह्यूमंस द मोर मैनेजमेंट, मोर प्रॉब्लम्स, ऑल दैट. सो मुझे समझना था, सिंस यू आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी योर सेल्फ, यू आर वेरी मच रिलाइंग ऑन IT, AI, डेटा एंड ऑल दैट. सो क्योंकि आपके पास उसके बाद भी यू हैव 100 पीपल, राइट? सो अगर ये एक नॉर्मल कंपनी होती जिसके पास इतना एज नहीं होता ओवर द टेक्नोलॉजी, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द रियल एग्जांपल, जिससे हमें एक एक न्यूमेरिकल आंसर मिल पाए. तो आपको क्या लगता है कि ये 100 लोग जो है विद द टेक्नोलॉजी, अगर ये नहीं होता तो मेरे को इतने लोग रखने पड़ते हैं, सो दैट बिजनेसेस, SMEs कैन एक्चुअली वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट दिस वर्सेस दिस, it can be 200, it can be 500, it can be 120, I don't know. So versus this 100 can actually do the job of normal case scenario में अगर होता तो इतना होता, तो हम थोड़ा सा उससे समझ पाएंगे नंबर से. Yes, बिल्कुल. I'll give you examples also. हम्म. At an I have seen a software normally handles a typical piece of software in any SME handles the work of 8 to 15 people approximately. But to do that, you need 2 to 3 people additional who understand softwares, who are equipped with that. So net आपको एक सॉफ्टवेयर पीस से 7 से 10 पर्सन का बेनिफिट हो जाता है in terms of profitability. But that is not the right compass to measure. The right compass is the consistent in the quality, right? I'll give you an example. We build इंडिया में इंश्योरेंस होता है, एंड एवरी इंश्योरेंस में क्लेम प्रोसेस जो कॉर्पोरेट के होता है, क्लेम प्रोसेस होता है, राइट? यू नीड टू मैनेज इट, एंड देयर आर ब्रोकर्स. So one is these big brokers, ICICI, SDFC, and then there are sub brokers. So what these sub brokers want is, now they have a team of 40-50 जो कॉर्पोरेट्स को पॉलिसी बेचते हैं, पॉलिसी रिन्यू करते हैं. कोई पर्सन ऐड होता है कंपनी में तो ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, दे डू ऑल दोस थिंग्स. और उन्होंने उसके लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट बैठा के 40-50 लोग बैठ के काम करते हैं. अगर वो मोटा मोटा लेट्स से साल की 70-80 पॉलिसी बेच रहे हैं टाइप्स, तो उनको चाहिए होता है मैनेजमेंट के लिए. हमने इनके लिए सॉफ्टवेयर पीस बनाया. This entire aspect of managing your policies, your addition, deletion, right? Claim management आसान करे ताकि बार बार फोन कॉल नहीं उठाना पड़े. So उनकी टीम नॉर्मली 2022 के आसपास में they kind of understood कि यार we have certain low performing guys, let them check out and hire and keep only the right people, and hired few more people to operate the technology piece and equip them. So cost तो 50% डाउन हुई, जो एक्सपीरियंस था एंड क्लाइंट के लिए वो 200% इंप्रूव. अब वो फोन कॉल का वेट, अच्छा किसी ने फोन लगाया, मेरा क्लियर का प्रोसेस क्या रहा, यार मेरा एक पर्सन मैंने ऐड करने को बोला था, हुआ नहीं. सो इट हैज बिकम अ सेल्फ सर्विस सिस्टम. In a very simple nutshell, I can tell you this: 50% कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, 200% एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट हो जाता So that is why in my question I first mentioned efficiency and then with a cheaper cost eventually, because initial cost है. तो Yes, आती है जब हम पहली बार आते transition हैं. करते हैं towards technology. um, एक और चीज था, all your businesses have been on to technology side. मेरे जैसा लेमैन तो उसको वही बोलेगा, क्योंकि पहले भी आपने एक वेबसाइट हाँ. बनाया, फिर सेकंड टाइम वेबसाइट बनाया, नाउ दिस इज अबाउट हेल्पिंग पीपल टू डू देयर वर्क विच इज अगेन वेबसाइट या जो भी ऑटोमेशन. तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका ये बैकग्राउंड नहीं है, और अभी बोलते हैं कि नाउ आफ्टर AI यू डोंट इवन नीड कोडिंग, इट विल बी वेरी इजी टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट्स व्हिच इज डायनामिक, नॉट जस्ट स्टैटिक एंड ऑल दैट थिंग, एंड यू मस्ट बी वेरी वेल रेड इन दिस एरिया बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड. सो इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु डज नॉट हैव द बैकग्राउंड, वो कर सकता है? यस, वो कर सकता है. वो मोर देन अ वेबसाइट से आज की तारीख में वो एप्लीकेशन भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है. बट
वो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। नॉन टेक्निकल पर्सन्स को हाई वैल्यू इनपुट प्रोवाइडर्स होना चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट, जो नॉन टेक्निकल है वो किसी इंडस्ट्री का नॉन टेक, मतलब वो टेक्नोलॉजी का नॉन टेक है, पर वो किसी इंडस्ट्री का तो टेक्निकल बंदा होगा। हम्म, रिटेल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, वॉट एवर इट इज, मैन्युफैक्चरिंग। If he understands those technology, these industries well, he understands his department, his problem statement well, and if he can articulate those problems and provide a proper input to any of the technology team, तो जो आउटपुट होगा बहुत रिफाइंड होगा। अब इसको अगर हम देखते हैं, आपका एआई इज एज गुड एज योर प्रॉम्प्ट, राइट? हम्म, हम्म, द बेटर योर प्रॉम्प्ट इज, द बेटर द आउटपुट इज। हम्म, Technology works in the same way. The better input you will give, the better output you will get. हम्म, First thing. So focus on becoming a high value input provider. Second thing, yes, you can launch your business, you can launch certain ideas quickly in a matter of days with AI. पर वो जैसे ही आपका आइडिया प्रूव होगा, जैसे सक्सेसफुल है, then those applications cannot run in that ecosystem. हम्म, It needs professional help, जहाँ पे वो उसको माइंडसेट के साथ सोचेंगे। हम्म, अभी वन ऑफ द बिगेस्ट okay, फ्रस्ट्रेशन दैट वी आर सीइंग एज अ टेक्नोलॉजी, हम एआई से कोडिंग करवाते हैं, हम्म, उसने कुछ बोलते हैं ये करना, फिर सेकंड बोलता है अब ये भी करो, तो वो क्या करता है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को ना समझते हुए वो हमारे पुराने काम को जो सही हुआ था उसको खराब कर देता है, राइट? ऐसा कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता था। हमारे इंडिविजुअल को तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ऐसे। हाँ, तो वो आपने बैठकर 3 दिन आपने मेहनत करी, 4 दिन मेहनत करी, और आपने एक गलत प्रॉम्प्ट दे दिया। हम्म, आपने प्रॉम्प्ट फिर भी सही दिया, एआई ने हम्म, उसका कॉन्टेक्स्ट गलत समझ लिया, हम्म, एंड इट हैज गॉन अहेड एंड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपको कौन सी फाइल में क्या चेंज हुआ आपको पता ही नहीं, एंड यू आर नॉट टेक गाय, हम्म, तो आप थोड़ी जाके कोड फाइल्स चेक करने वाले, हम्म, एंड देन यू विल कॉल अ पर्सन, भाई हम्म, मेरा रायता फैल चुका है, संभाल लो। वो भी यही बोलेगा, सर एआई से बना है, एआई को बोलो रायता संभालने के लिए। हाँ ठीक बात है। बिकॉज वो भी इट यही हैज द बोलेगा। एंटायर, हाँ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। आप यही सोच रहे थे कि एआई इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, सो इट इज नॉट। एंड आई बिलीव एआई इज द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इंटर्न। ओके, वो एम्प्लॉय नहीं है, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं। हम्म। तो उसको एक सबॉर्डिनेट की तरह काम करो जो आपके सारे काम करो, पर हम्म। कीप ह्यूमन इन द लूप। I have one last question. थैंक Since यू। our channel is thank you. Since our channel is guiding young professionals mainly, we do get 10 plus years, 15 plus years work experience also. Those who are working in job, but we also get a lot of freshers, 1 year, 2 year, 3 years work experience. Now they want to get into education once again. This can be some executive education. This can be some certification. This can be a regular program also. So there is always a debate. So I wanted to understand your perspective. There is always a debate कि graduation के just बाद they should get into MBA or they should get some experience and then get into MBA. Your journey says that you took some experience and then you decided to go for an MBA. So what do you think after seeing the world for so long? What do you think is the right way? क्योंकि अभी भी ज्यादातर लोग जिनको MBA करना होता है रेगुलर में, वो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन व्हेन आई से ज्यादातर, इट्स अराउंड 60-70%। फ्रॉम फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव जो रेगुलर एमबीए कर रहे हैं, नॉट विद द जॉब। आपने रेगुलर एमबीए किया था आफ्टर लिविंग योर जॉब, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? व्हाट्स द राइट वे अकॉर्डिंग टू यू फॉर आवर ऑडियंस? Okay, I believe that the right way is having an experience before joining MBA. If you break down the word MBA, Master in Business Administration. So business को कैसे संभालना है, you learn about that. And how do you learn about business? आपने ग्रेजुएशन तो कभी बिजनेस का देखा ही नहीं होगा, unless you come from a business background, like business families. A majority of them you come from a service background, right? Uh, छोटा किसी के लाला शॉप भी है, इट इज स्टिल नॉट अ बिजनेस। वो वो ठीक है, वो जॉब नहीं है पर वो बिजनेस भी नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, राइट? एंड यू गेट टू नो द कॉन्टेक्स्ट इन अ जॉब ओनली, एंड जॉब टीचेस यू हाउ डू यू वर्क, हाउ डू यू बिकम प्रोफेशनल,
स्टाइल ऑफ वर्किंग, यू लर्न सर्टेन फ्रेमवर्क्स, ताकि जब एमबीए में आपको जो प्रोफेसर आके पहले दिन बताएगा, कुछ फ्रेमवर्क्स बताएगा या कुछ एग्जांपल्स देगा, सिचुएशंस देगा, हाइपोथेटिकल यूज केस देगा, आप वो फेस कर चुके होगे पहले किसी ना किसी रूप में अपनी जॉब में, हम्म। तो तो यू नेक्स्ट विल बी इशू ये एबल टू आता है कि रिलेट। फिर ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब मिल रही है वो बहुत कम सैलरी की मिल रही है, तो आरओआई नहीं है, ये सब नहीं है, तो वो घबराते हैं कि दुनिया को बताने में कि यू हैव गॉट दिस एग्जीक्यूटिव का वर्क या दिस सच स्मॉल सैलरी या वट एवर। तो उनको लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो फिर कम से कम दुनिया को ये तो बताएगा लड़का एमबीए कर रहा है या मैं एमबीए कर रहा हूँ। तो उसमें चले जाते हैं वो। तो उसको कैसे देखा फिर, मतलब देखा देखो जाए तो। वो पेरेंट्स का प्रेशर ज्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा है। यस, कुछ लोग होंगे जिनको ये लगता होगा, बट मेजोरिटी ऑफ देम डज नॉट फील दैट। मेरी फर्स्ट सैलरी इन हैंड आती थी 23,240 रुपए, राइट, कमिंग फ्रॉम एन एनआईटी जयपुर, जहाँ का एवरेज पैकेज है ना, मतलब 6-7 लाख था। और उस टाइम पे लोग माइक्रोसॉफ्ट में गए थे, कंप्यूटर साइंस के लोग तो 40-50 लाख रुपए के पैकेज पे गए थे, 30 लाख में गए थे। एंड हियर आई एम 23,000 रुपए कमा रहा हूँ बैंगलोर के अंदर, हम्म। राइट। वो था, वो होता है, वो आरओआई नहीं, एजुकेशन आरओआई के लिए नहीं होती, राइट, दैट्स ह्यूज। पर अभी टाइम लगेगा क्या कोई समझ में। है ना। अब ठीक, जो समझ जाएगा उसका भला होगा। मॉनिटरी आरओआई, मुझे भी ये लगता हाँ, है। हाँ, ठीक है, हमने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो काम के नहीं, विच इज ऑलवेज डिबेटेबल, बट हम्म। एजुकेशन मेक्स यू मोर लॉजिकल, मेक्स यू साउंड, मेक्स यू अडल्ट। आप हम्म। रीजनिंग कर सकते हो किसी के साथ, है ना। आप किसी ने आपको कुछ बोल भी जाए, यू हैव दिस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग टू परसीव देयर थिंग्स, तो वहां पर वो फायदा मिलता है। अब कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, एमबीए वाला, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप 2 साल जो आपने पैसे दिए, जितने भी दिए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। हम्म। मेरे साथ ये बेनिफिट था कि मुझे ये पता था कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो मैंने सब्जेक्ट्स भी वही चुने जो मेरे काम के थे, हम्म। लाइक ब्रांडिंग, लीडरशिप मैनेजमेंट। आई ऑप्टेड फॉर अ सर्विस सब्जेक्ट फॉर सर्विस मैनेजमेंट, तो आपको बिकॉज कैसे डीप डाउन क्लियर था मुझे कि पहले से कि स्टार्टअप करना है? लोग को तो सपना ही होता है, अल्टीमेट सपना इज टू हैव स्टार्टअप। ये तो आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड ऑन मी, मैंने कुछ अलग से नहीं करा है। somehow just I was never came to a thought कि जॉब करना है। I don't hate jobs। इट्स जस्ट दैट यू कल, फील इट्स नॉट फॉर मी। नहीं ऐसा भी नहीं है, अगर कल को सब कुछ खराब होता है तो आई कैन डू जॉब इजिली, आई कैन डू जॉब, मुझे इशू नहीं है जॉब करने में। ओके। पर मेरा ये है कि जब मैंने कोई सपना देख ही लिया है, थोड़ी सी मेहनत कर ले तो उसको पूरा करने में, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो जॉब तो बैठी ही बैठी है। फिर ऑलराइट। देन ये मेक बस, सेंस। एंड देन फिर शादी आप एक कॉर्पोरेट बीवी से कर लो, हाँ, ताकि वो कमा उससे के क्या ले होगा? एटलीस्ट आपके बैलेंसेस चलते रहेंगे लाइफ, एक इंटरनेशनल ट्रिप चलती रहेगी लाइफ अरे वाह, पर दिस ईयर। रिमाइंड्स मी ऑफ दिस पर्सन जो शार्क टैंक में नहीं आए थे, बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, आउट बट नॉट डाउन, जिसमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ही हैड सम शूज का, तो ही सेड मेरी वाइफ फुल टाइम, मतलब उनका जॉब एकदम ठीक ठाक चल रहा है, सो दैट टेक्स केयर ऑफ द फैमिली एंड किड्स एंड सो ऑन, हाँ, बट उनका स्टार्टअप बैक टू बैक कुछ कुछ इशू चल रहे थे। वो इमोशनल स्टोरी वाला था ना, शूज वाला। हाँ आई हाँ थिंक ही हाँ, इज यस आल्सो यस यस। फ्रॉम आईएमटी गाजियाबाद और समथिंग सिमिलर। शूज का था एंड ही हाँ स्टार्टेड कराइंग, है ना। हाँ, हाँ, बट दैट वेंट वायरल एंड उसके बाद उनको तो एक्विजिशन वगैरह के कितने ऑफर आ गए थे, एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी डूइंग ग्रेट नाउ। नहीं, बट ऑलराइट। it is a good thing। जस्ट टिक इनटू दैट इकोसिस्टम। हो सकता है आज ना चले, कल ना चले, पर परसों पक्का चले। So true. Thank you so much, Manu, for your time. Thank you so much, it's been a pleasure talking to you, and Same here. I'm happy to be the part of helping students, चाहे वो एमबीए Wow. के अराउंड हो, एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड हो, आई एम ऑलवेज देयर। Awesome. So I will put your LinkedIn link also in our description box. So in case somebody wants to have a question or maybe looking for a mentor, you have such a great experience in all the fields, in all the angles. तो मुझे लगता है कि if they come up with a very क्योंकि कई बार देखा है बहुत वेग प्रॉब्लम्स आती है जिसको मैं चाह कर भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज they have to work on their problem first before I tell them the solution. But somebody who comes up with this background work जिनका हो जाता है, तो I'm sure you would love to, extend your hand to help them further.
No, no, I would love to do that. Thank you so much for that. Thank you.